Yes, so yeah, good morning everyone. We are going to start with today's class. Yeah, so I'll start and pick up from the point where we were in the last lecture. So in the last lecture, I defined the statement of another test. This is Cauchy integral test, and this is for series of non-negative terms, which actually means essentially positive terms. So you know the difference between non-negative and positive is just the zero. So if I'm writing an greater than equals to zero, so that means an is greater than zero. In reference to the series, this might be true because even if any of the term of the series is exactly equal to zero, then it does not count because I'll just give you an example. Say if you are writing like this, or if you are simply writing like this. Okay, let's take the example of finitely many terms. So if you have 1 plus 2 plus 3 plus 0, or if you have 1 plus 2 plus 3, then they will be exactly same because the 0 which you have added additionally or subtracted, it will not create any difference in sum or the convergence of the series. So ये तो मैंने finite का example लेके बताया है, but that is true for infinite series also. So लिखने में हम non negative terms ही लिखते हैं, but essentially आप पॉजिटिव भी उसको कंसिडर करोगे, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज किसी भी टर्म का एग्जैक्टली जीरो होना इज डज नॉट मैटर and one of the term can be zero or any more than one of the terms in the series can be zero. So right, so let me just tell you the statement of this again. What was the statement of this test? So this test has, first thing, it is applicable to series of non-negative terms. So it has the conditions. So those conditions were that if I'm not writing it completely, I'm just writing it in very short, that if this general term of the series an, you compare it with some function f of n, this is f of n, as a function you deal with it, then and so the conditions the function has to satisfy, this f of this function f of x should be continuous. When you're writing in function sense, so you can write f of x, x be the general indeterminate variable, or you can write it f of n also, that's okay. It's continuous, it's positive, and it is decreasing, right? Then we say the integral f of x dx, capital N to infinity. So this is going to happen for all n greater than equals to n. This integral and this series an behave alike, or the other word was they converge or diverge together, right? So that means the integral will be evaluated, and whatever will be the answer of the integral, if the integral is going to be finite, so we will say this will imply convergent, and if the integral value will be infinite or it will not be defined, then we will say the series is divergent. So we have to satisfy these conditions. So I'll be explaining you the meaning of what is this for all n greater than equals to n. We already did one example of integral test. I gave you this example of this series an is equal to 1 by n. And then when you solved it using integral test, then we find out that this series summation an is equal to summation 1 by n is a divergent series. This is was coming out to be a divergent. We did the proof using integral test. So we will take more examples of integral test, but let me first clarify you the meaning of that term, that whenever you write some condition and you write for all n greater than equals to n, like here we are writing that your function fn is decreasing decreasing for all n greater than equals to n, then what does that mean? So if you remember, I already explained you this in a few lectures back, but still, okay, those who would not understand or missed that, so I will explain that again. So what whenever you simply write for all n, that means n starts from 1 2 3 whatever, means wherever your n is starting from. जैसे सीरीज का जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यूजुअली 1 to infinity होता है, बट यू विल सी एग्जांपल्स in which it will be written 0 to infinity also, and you can find examples in which it is written
2 to infinity also. So this will be the starting index, 1 0 2 whatever it is. So जब आप for all n लिखते हो दैट मीन्स n की सभी वैल्यूज के लिए, सभी वैल्यूज मीन सीरीज की सारी टर्म्स के लिए दैट कंडीशन हैज टू बी ट्रू, मीन्स वट एवर कंडीशन यू आर रेफरिंग. जैसे हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, राइट. सो जो पॉजिटिविटी है मीन्स ये एफ एन है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर ऑल एन. उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है that we can relax the condition. It should be true for all n. That means all terms of the series should be positive or the non-negative, right? So this is for the first condition. And similarly, जो condition है continuity की, so function continuous होना चाहिए, so that is also for all n. But जो decreasing वाली condition है उसमें भी relaxation है. It can happen for all n greater than equals to n, where capital N is some positive integer. So that means your function can be like this. मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रही हूँ. यूजुअली हम ग्राफिकली नहीं चेक करते हैं. यू नो हाउ टू चेक अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें डेरिवेटिव वाले मेथड से हम चेक करते हैं. इट्स डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव. बट टू अंडरस्टैंड इट इंट्यूटिवली, व्हाट डू एसेंशियली आई मीन बाय दिस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सपोज आप सीरीज की टर्म्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो, यू ट्राई टू सी द थिंग्स. So for it may increase up to certain number of terms, certain finite number of terms. So जहां तक वो increasing है, that be capital N. उसके बाद it is monotonically decreasing, right? Sorry, ये graph will be like monotonically decreasing. So that's what it means कि कुछ allowed है कि कुछ particular terms तक वो increase कर सकता है और उसके बाद it can decrease. अगर वो शुरू से decreasing नहीं भी है तो मीन्स अगर इस तरह का फंक्शन है दैट्स ओके, वो शुरू से ही डिक्रीजिंग है दैट इज वैलिड, उसके ऊपर हम इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं. अगर वो इस तरह का फंक्शन है कि फॉर स्टार्टिंग सम टर्म्स इट राइजेस एंड देन डिक्रीजेस, सम मीन्स दिस एन कैन बी एनीथिंग, राइट. दिस एन कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. जरूरी नहीं है छोटा होना चाहिए, इट कैन बी 100 ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज उसके बाद इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं एंड देन इट हैज टू बी डिक्रीजिंग. सो वी विल सी दिस इन द क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में ये कंडीशन आएगी. एंड देन दैट्स व्हाई द इंटीग्रल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड द सीरीज सम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. So we will evaluate the integral from that point and I will explain you in the example. Actual में difference नहीं पड़ेगा चाहे आप integral 1 से evaluate करो चाहे आप capital N से evaluate करो. I'll explain this जब भी इस तरह का ये example आएगा. I hope this is clear. ये अभी statement ही discuss कर रहे थे and one example using integral test we have already proved. This is a very important series. It has plenty of applications. Harmonic series 1 by n, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 and so on. We have seen that this is a divergent series. There will be many interesting videos you will find on YouTube or very interesting text also. You can read in your book Thomas and Finney also. Some additional information about this series is given and because this series has many applications. So that's why this becomes a point of interest to study this series and this actually happens to be a divergent series. So now let's take another example which we want to test using integral test, whether that is convergent or not. So the series which I am going to define is called P series. So it's not one series, it is a class of series. It's a family of series which is known as P series. So this is the how a P series looks like, 1 over n raised to power P. Yeah, I have got a question. The finite value of the integral gives the sum of the infinite series. The answer is no. I told you that there, see, look at the statement. Nothing is being told about sum of the series. ये सिर्फ कन्वर्जेंस बता रहा है टेस्ट आपको या डाइवर्जेंस बताएगा जो भी इंटीग्रल का बिहेवियर होगा, बट इट इज नो वेयर टेलिंग यू कि इफ इट इज कन्वर्जेंट देन दिस इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द सीरीज. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट कमिंग. सो वी विल नॉट मेक एनी assumption कि जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो सम ऑफ द सीरीज है. एंड लेट मी क्लैरिफाई वन मोर पॉइंट हियर टू ऑल ऑफ यू. ओनली द ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने पहले करी है, द ज्योमेट्रिक series and the
telescoping one. So only those series were capable, only those series test were having the information of sum of the series. जैसे हमें ज्योमेट्रिक सीरीज का पता है कि मॉड आर लेस देन वन हो तो कन्वर्जेंट है, एंड इफ इट इज कन्वर्जेंट देन a over 1 minus r is sum of the series. तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट दो इंफॉर्मेशन देता है, कन्वर्जेंस भी बताता है, सम भी बताता है, और टेलीस्कोपिंग सीरीज भी दो इंफॉर्मेशन देता है. वी नो कि जो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर वो सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट आ जाए तो वी नो सीरीज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी कन्वर्जेंट है, और जो इसकी लिमिट आती है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, वो ही आपका सम ऑफ सीरीज होता है. So in geometric series में, telescoping series में, we have two answers for about the series, its convergence conditions and what is the sum of the series if convergent. But from this test onwards, Cauchy integral test and future में अभी हम बहुत सारे टेस्ट करेंगे, no test is going to give you the information about what is the sum of the series. ये सिर्फ इतना ही बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सम आपको नहीं बताएंगे. सो दैट मीन्स you are not supposed to guess it, and there is no way to identify some of the series using these tests. So I hope the answer is clear. इंटीग्रल की वैल्यू से आपको कुछ इंप्लाई नहीं करना है कि वो सम है सीरीज का, सिर्फ ये इंप्लाई करना है कि अगर फाइनाइट आ गई तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है. इट्स वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल सम ऑफ द सीरीज. Right, so coming back to this P series, summation n is equal to 1 to infinity 1 by n raised to power P. So P is a parameter here because usually हमारी series जो है function, you know how our series look like. This is summation an. So an is the general term. So you can say the general term is 1 over n raised to power P. Now this P can be anything. P is any real number, it is an integral power, it can be a fractional power also. So P is just having any real value, right? P being any real number. Like, so now we have to give an answer for different values of P. P अगर नेगेटिव होगा तब सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, P पॉजिटिव होगा तो क्या होगा. सो this is a real number, so obviously it can lie anywhere between minus infinity to infinity. So we need to give answer accordingly. For all the values of P, we have to give an answer that what is going to happen to the series behavior, right? So इस series को हम analyze करने वाले हैं. हम अभी तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग. So you can see if you try to apply, okay, firstly we'll segregate according to the values of the P. Let me move to next page. So this is the series under consideration, 1 by n raised to power P. So one thing is clear, if we take, say P is negative. P is negative means, example, P is minus 1, P is minus 3 by 2, P is minus 10, negative numbers, you understand, whatever negative real number it can be, fraction, decimal, or the integer. If P is negative, so you know what happens? What is the value of the limit in that case? Yes, I need answers from you. What is the value of this limit in if P is negative? Infinite, it will be infinity, yeah, clearly, because actually it will be, because P is negative, so basically it will be working as a positive power in the numerator. So it will be something like limit n tending to infinity n raised to power minus P, which will go to infinity because infinity raised to power something positive. Minus P positive हो जाएगा, right? P is negative, so minus P will be positive. So infinity raised to power anything positive is infinity. So the answer is infinity, right? You can have any example. Limit n tending to infinity 1 over n raised to power minus 2. So which is nothing but essentially n raised to power 2. We know the answer, which is infinity. So this is going to happen for all the cases when P is negative, right? So now you need to tell me, can you comment anything about the convergence or divergence of the series an is equal to 1 by n raised to power P in this case? If you can tell me anything. The answer is going to be divergent is divergent by which test?
So this is divergent for p less than 0 by nth term test. So you know what I have just done? I have just applied nth term test. So nth term test के according मुझे limit निकालनी थी सीधा. So limit n tending to infinity 1 by n raised to power p. Infinity आ गई. This is something non-zero. So according to nth term test, whenever you just get any limit which is not equal to 0, whatever it is other than 0, you have to imply the series is divergent. So ये case तो हमारा clear है. If p is going to be negative, so this series is going to be divergent. So it's clear. जब भी आपको इस तरह के questions मिलेंगे, summation n cube, summation n raised to power 3 by 2, summation n raised to power 4. So basically ये p series है, it's just p की value negative है. So whatever, उसको p series बोले नहीं बोले, that's your wish. But otherwise, these kind of series straight away are divergent because you can apply the nth term test according on them and straight away write your answers to be infinite. The limits are infinite because n is having some positive powers. So all of these series will come in the category of the divergent by nth term test. So p less than 0 ho gaya. So now we'll move to next case. So let's move to next case. If p is greater than equals to 0, the positive one, right? The non-negative one. So isme bhi if you take the extreme case, yeah, if p is equal to 0, if you take p is equal to 0, so what does your series become? P equals to 0 means n raised to power 0. So summation 1 over 1, because anything, this is n is a natural number, we know, raised to power 0 is 1. So summation 1 is 1 plus 1 plus 1 plus 1. You keep on doing that. So what is that? That is also a divergent series. ये हमने सबसे पहला एग्जांपल किया था. This is a constant series. Any constant you keep on adding to itself infinitely many times, that is a divergent series. So p is equal to 0 के लिए भी आपकी सीरीज क्या आई? Divergent, right? So this was case 2, p equals to 0. And now let's do case 3, p is strictly greater than 0, right? स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू 0 भी हो गया. अब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की बात करते हैं. सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की जब हम बात करेंगे, सो देन आई कैन सी कि जो मेरा सीरीज है ए एन विच इज 1 over n raised to power p, सो आई नो इट सेटिस्फाइज. अब यहाँ पे nth टर्म से कोई आंसर नहीं आएगा. अगर आप nth टर्म टेस्ट यहाँ पे लगाते हो p पॉजिटिव के केस में, सो द लिमिट इज गोइंग टू बी 0. All of you know 1 by n goes to 0, 1 by n square goes to 0, 1 by n raised to power 3 by 2 goes to 0. So जब p positive है p series में, means these are the examples of the series, so उनकी nth limit 0 ही आएगी, right? So obviously inconclusive है using nth term test. तो nth term test से तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आया. So that means now we need to think of some other test. So other test क्या है? इंटीग्रल टेस्ट, बिकॉज जीपी सीरीज भी नहीं है, ये टेलीस्कोपिंग भी नहीं है, nth टर्म से भी आंसर नहीं आया. सो ऑब्वियसली वी विल बी थिंकिंग अबाउट द इंटीग्रल टेस्ट. एंड इंटीग्रल टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए यू नीड 3 कंडीशंस. एंड व्हाट आर दोज? पॉजिटिव होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए. सो जो जैसे हमने 1 by n के लिए कल किया था, ये वाली सीरीज के लिए भी हमने तीनों कंडीशंस वेरीफाई करी थी. अब बस उसका जनरलाइज्ड वर्जन है हमारे पास 1 by n raised to power p है. So you take it as your function fx is 1 by x raised to power p, because I told you हम उसको as a function से compare करते हैं. So this is 1 by n raised to power p is fn. So if you write it as a function f of x, this is 1 by x raised to power p. So clearly f of x is, ये हम इस केस में है p पॉजिटिव में. So clearly f of x is continuous. ये continuous function है, everybody should know. 1 by n, 1 by n square, 1 by n cube. They are polynomial functions, rational functions. So rational function क्या होता है? Polynomial divided by polynomial. So ऊपर भी polynomial ही है, x की कुछ भी power नहीं है, but denominator में you just have something like x square, x cube or x raised to power 3 by 2. It's a generalized form of the rational function. We know all these functions are continuous. So no need to give any justification for this step. So you just write clearly f of x is continuous. Second condition, we know this is a positive quantity because x आपका positive है. X is representing the natural numbers domain, right? So we know this is positive.
सो आई टोल्ड यू ये दोनों कंडीशंस हमेशा ही इन एवरी क्वेश्चन डिफॉल्ट सेटिस्फाइड होती हैं. द ओनली थिंग यू नीड टू वर्क ऑन इज डिक्रीजिंग पार्ट. सो आई नीड टू प्रूव दैट एफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग. वो मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्लियरली इट इज डिक्रीजिंग. सो हाउ टू डू दैट? सो फॉर दैट ऑब्वियसली हाउ ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू हैपन. डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करते हैं हम? डेरिवेटिव को नेगेटिव प्रूव करेंगे. एफ डैश एक्स we will find out f dash x. So what is the value of f dash x? This is your function f of x. The derivative is going to be minus p x raised to power minus p minus 1. Right? Your function is x raised to power minus p, and obviously when you take the derivative, this is simple, minus p x raised to power minus p minus 1, which is clearly negative because इस एक्सप्रेशन में p जो है आपका पॉजिटिव है और x रेज टू पावर वट एवर ये माइनस p ये भी क्या होगा पॉजिटिव. उसकी पावर नेगेटिव है बट ऑब्वियसली द क्वांटिटी हैज टू रिमेन पॉजिटिव और आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है. सो क्लियरली द डेरिवेटिव इज नेगेटिव. देयरफॉर माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स. अब जो यहाँ पे हम कहते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n वाली कंडीशन होती है कि वो स्टार्टिंग से हो सकता है डिक्रीजिंग नहीं हो बट कुछ टाइम बाद डिक्रीजिंग हो. सो दिस कैपिटल N कैन बी 1 ऑल्सो. हो सकता है वो स्टार्टिंग से डिक्रीजिंग हो जैसे ये वाली एग्जाम्पल में. सो दिस इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स. एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि उसके बाद ये डिक्रीजिंग होगा. सो वी हैव वैलिडेटेड ऑल द 3 conditions. We have tested all the 3 conditions of integral test are satisfied. Satisfied means that we can apply the test. बस अभी तक टेस्ट अप्लाई नहीं हुआ है, अभी तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं जो प्री रिक्वेस्ट है, तो वो सेटिस्फाई हो गए हैं. तो अब हम टेस्ट लगाएंगे. फॉर एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट वी नो व्हाट टू डू. वी नीड टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 1 by x raised to power p dx 1 to infinity. So ये क्या लेना इंटीग्रल का लोअर लिमिट? ये आपको सीरीज के उससे मिल जाएगा. या जैसे डिफॉल्ट यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता है. सो यू जस्ट टेक दैट 1 एज अ लोअर लिमिट. सो यस वी नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस integral 1 by x raised to power p dx 1 to infinity. So I'm sorry, we know how do we evaluate this kind of integrals. Actually we write it like this. This is a proper way of doing that. हम इन्फिनेट को लिमिट की फॉर्म में ले आते हैं और उसकी जगह पे कोई नंबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. b आई एम जस्ट टेकिंग b बिकॉज यूजुअली a टू b हम लेते हैं. सो a being the lower limit, b being the upper limit. So when you do this, लिमिट हम बाद में इवैल्यूएट करेंगे, पहले हम इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे. सो इंटीग्रेशन इज इजी. This is essentially x raised to power minus p dx. So we know the integral is x raised to power minus p plus 1 over minus p plus 1. Clearly minus p plus 1 should be non-zero. So p is not equal to 1. So ये जो केस है आपका p should not be equals to 1 because p 1 होते ही you know ये क्या हो जाएगा minus 1 plus 1 that will be 0. So 0 is not allowed in the denominator. तो जब आप ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो, so this is actually this, right? I'll explain you here. जैसे 1 by x का अगर इंटीग्रल करो, so we know वो क्या होता है log x, बट आप 1 by x square का इंटीग्रल जब करना चाहोगे, so that will be actually x raised to power minus 2. So minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. So we know there are different rules when the power is exactly 1. So we know the value of the integral is log x. ये हमने कल किया था हमारी सीरीज जो हार्मोनिक सीरीज 1 by n के लिए, बट आज हम उसका जनरलाइज वर्जन कर रहे हैं. सो वी हैव अ पावर हियर. सो यहाँ पे जैसे आप ये लिखोगे, so you have to see this condition that this is valid only for p not equals to 1. So यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि हम इस केस में हैं. We are in the case p positive, बट पॉजिटिव में अब सैग्रीगेशन हो गया कि नॉट इक्वल्स टू 1 में है बिकॉज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग मिलेगी. या सो नाउ यू सॉल्व दिस वन. सो यू सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. ये तो ठीक है, स्केलर है 1 over 1 minus p. दिस इज x raised to power 1 minus p. The limits are 1 and b. So 1 over 1 minus p. When you substitute the upper limit, so it's b raised to power 1 minus p, and when you substitute the lower limit, x is 1. So 1 raised to power anything is 1. Yeah, so this is what you need to
evaluate. The value of this you need to evaluate, right? 1/1 minus p, या सो ये तो कांस्टेंट है, -1 ही रहेगा. ओनली पार्ट इज ये वाला जिसमें लिमिट आ रहा है. सो इस लिमिट की आपको वैल्यू बतानी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट? b raised to power 1 minus p. This is b is going to infinity. b is going to infinity. infinity raised to power something. something means एक नंबर है. तो आपको बताना है, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, बिकॉज इफ इन्फिनिटी रेज टू पावर पॉजिटिव है तो इसका आंसर इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी रेज टू पावर नेगेटिव है तो इसका आंसर 0 है. तो यहाँ पे केस हो जाएंगे, राइट? केसेस में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज इन्फिनिटी इफ 1 माइनस पी इज पॉजिटिव. जो पावर है वो पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी रेज टू पावर पॉजिटिव विल बी इन्फिनिटी. एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 0 माइनस 1. मीन्स इसकी जगह पे मैं 0 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ इस लिमिट की जगह पे. एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इफ 1 माइनस पी इज नेगेटिव. क्लियर? क्योंकि पावर जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि देखो ये तो इन्फिनिटी है. अब इन्फिनिटी की पावर क्या है वो डिसाइड करेगी कि उसको अल्टीमेटली इन्फिनिटी बनना है या 0. सो आई एम राइटिंग इट हियर अगेन. द वैल्यू ऑफ द लिमिट 1/1 minus p. So this is infinity minus 1 if the case is, what is the case? 1 minus p is positive. 1 minus p is positive means p is less than 1, and the value of the limit is 1/1 minus p 0 minus 1 if p is greater than 1. Because you see 1 minus p का negative होना means obviously 1 minus p negative means p is greater than 1. So हमारे पास जो रिजल्ट आया है हमारे इंटीग्रल का वो यूनिफॉर्म नहीं आया है. इट हैज एग्रीगेटेड इनटू 2 पार्ट्स. p लेस देन 1 के लिए सो ऑब्वियसली दिस फर्दर इज इक्वल टू, इसको फर्दर क्या लिखोगे? इन्फिनिटी. बिकॉज यू नो एक्सप्रेशन में एक बार इन्फिनिटी आ गया उसमें से चाहे 1 सब्ट्रैक्ट करो व्हाटएवर, द फाइनल आंसर इज इनफाइनाइट. एंड फॉर दिस केस द फाइनल आंसर इज -1/1 minus p. So it does not matter whatever is the answer, but we know this is a finite number. So इस केस में फॉर p ग्रेटर देन 1 वाले केस में हमारा जो इंटीग्रल है 1/x raised to power p dx, दिस वन इज कन्वर्जेंट बिकॉज उसकी वैल्यू फाइनाइट आई है. और इस केस में p लेस देन वाले केस में हमारा जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आई है इनफाइनाइट. सो दैट इज डाइवर्जेंट. तो देयरफॉर बाय इंटीग्रल टेस्ट, सो व्हाट इंटीग्रल टेस्ट टेल्स कि जो भी इंटीग्रल का बिहेवियर होगा वही सीरीज का बिहेवियर होगा. सो बाय इंटीग्रल टेस्ट summation n is equal to 1 to infinity 1 by n raised to power p, this converges for this case p greater than 1 because उस केस में इंटीग्रल कन्वर्जेंट आया है, and diverges for p strictly less than 1. So this is the conclusion. So we have covered every case. Now I'll just summarize. You see, I'll just very quickly explain for those of you who are asking to explain again. Very quickly I'll go through all the cases. ये आपको ओरिजिनल सीरीज था. पहला केस ले लिया मैंने, पहली डिवीजन कर ली नेगेटिव पॉजिटिव. तो अगर p नेगेटिव है सो क्लियरली ये लिमिट की वैल्यू जो है दिस विल बी, बिकॉज दिस सीरीज विल बी लाइक दिस, इनफाइनाइट आएगी तो नॉन जीरो. देयरफॉर बाय nth टर्म टेस्ट यू कैन से p नेगेटिव के केस में आपकी जो सीरीज है हमेशा डाइवर्जेंट होती हैं. तो इस तरह की सीरीज आपको हमेशा डाइवर्जेंट मिलेंगी. यू जस्ट सिंपली राइट डाइवर्जेंट बाय अप्लाइंग द nth टर्म टेस्ट. फिर हम मूव करते हैं p इक्वल्स टू 0, दैट्स अ ट्रिवियल केस. p की इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते ही ये कांस्टेंट सीरीज बन जाएगी 1 + 1 + 1, so which is divergent, we know that. अब आया p greater than 0, तो p greater than 0 में जब हमने nth टर्म लगाया सो आंसर इज 0 बिकॉज द सीरीज विल बी लाइक 1/n square. सो वी नो दैट कि nth टर्म टेस्ट में जब भी लिमिट की वैल्यू 0 आ जाती है we can't conclude anything. उस केस में हम लिखते हैं it may or may not converge, so that is inconclusive. So that is a result coming from nth term test. So क्योंकि nth term test से आंसर नहीं आया है, so now we'll think of applying the integral test because इसके ऊपर और कोई टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ना ये जीपी सीरीज है ना ये टेलीस्कोपिंग है. So since I am thinking to apply integral test, so मुझे integral test की conditions verify करनी है. So I wrote it as a function. It is definitely continuous, positive.
डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मैंने डेरिवेटिव लिया, वो नेगेटिव आ गया, सो डिक्रीजिंग भी प्रूव हो गया. सो तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाइड हो गई, that means now I can apply the integral test. Apply means now I can compare the integral with the series. तो अब हम इंटीग्रल को इवेल्युएट करना इज अवर टास्क. So this is your series 1 by x raised to power p. Integral will be evaluated from 1 to infinity. तो इनफाइनाइट लिमिट हो जाती है जब भी वन ऑफ द लिमिट्स और बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्चुअल में इन्फिनिटी आपको लास्ट में ही जाके सब्सटीट्यूट करना होता है, तो उसको लिमिट फॉर्म में लिख लेते हैं और उसकी जगह पे नंबर रिप्लेस कर देते हैं बी. सो अब इसको मैंने इवेल्युएट किया, so I got this value, but this is clearly valid when p is not equal to 1. अच्छा, अब p equals to 1 वाला केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. p equals to 1 मीन्स ये समेशन 1 by n जो हार्मोनिक सीरीज था जो हमने कल किया था, वी नो p equals to 1 के लिए वो डाइवर्जेंट है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट केस. सो दैट्स व्हाई अब p equals to 1 का हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिला है, बट वी ऑलरेडी नो द आंसर फॉर दैट केस. सो p नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए है ये, बिकॉज यू सी नहीं तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा. सो इसको फर्दर सॉल्व किया, सो ऑल दीज कैलकुलेशंस वी लैंडेड अप हियर. सो अब इसकी वैल्यू इस पावर पे डिपेंड कर रही है. इफ द पावर इज पॉजिटिव, सो इन्फिनिटी रेज्ड पावर पॉजिटिव इज इन्फिनिटी, अदरवाइज इट इज 0. सो पावर मीन्स 1 माइनस p. सो 1 माइनस p पॉजिटिव होना मीन्स p लेस देन 1. सो p लेस देन 1 होगा तो लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है, p ग्रेटर देन 1 तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है. फाइनाइट वैल्यू आना मीन्स इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट वैल्यू आना मीन्स इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. सो वी गॉट द कंक्लूजन कि p ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगी. सो ये हम किस पार्ट का आंसर कर रहे थे? पॉजिटिव का. सो द कंक्लूजन इज, अगर हम एक कंक्लूजन विड्रॉ करें, सो द कंक्लूजन इज ये जो हमारी p सीरीज है जिसको हम p सीरीज बोलते हैं, सो दिस converges if and only if p is strictly greater than 1. So I hope you understood the meaning of this p, that what is happening, p should be greater than 1, only then it is going to converge. You see हमने सभी का आंसर्स निकाले हैं. p greater than 1 के लिए कन्वर्जेंट आया और किसी भी रेंज के लिए कन्वर्जेंट आया ही नहीं है. देखो p लेस देन 1 के लिए भी डाइवर्जेंट आया, p इक्वल्स टू 1 जो हमने कल किया था वो भी डाइवर्जेंट था हार्मोनिक सीरीज, और p नेगेटिव के लिए भी डाइवर्जेंट था. सो यू नो ये आपका p है, दिस इज द कंप्लीट रियल लाइन. सो व्हेन p इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, सिर्फ उस केस में आपकी सीरीज, ये p सीरीज जिसको हम बोल रहे हैं कन्वर्जेंट है. बाकी सभी केसेस में एवरी रियल वैल्यू फॉर p इक्वल टू 1, इवन इक्वल्स टू 1 के लिए भी वो डाइवर्जेंट की कैटेगरी में आता है. सो दैट्स व्हाई आई कैन कंक्लूड दिस, एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड p series test. तो whenever you see this type of series in the question, तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रल टेस्ट, आपको डायरेक्टली टेस्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, राइट? ये आया कैसे? वो इंटीग्रल टेस्ट से आया है, वो हमने प्रूव कर दिया, तो आपको इंटीग्रल टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी भी समझ में आ गई. और p सीरीज का जो टेस्ट है कंडीशन, अगर मैं सीधा ये आपको बता दूंगी तो यू विल नेवर गेट टू नो अच्छा ये कैसे आया रिजल्ट, बट दिस रिजल्ट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द इंटीग्रल टेस्ट, राइट? Okay, so this is the conclusion about this. So if you do some examples, so right, very quickly you just need to give me answers. Let me write the questions. Yeah, so you need to tell me convergent or divergent. So 1 by n raised to power 4, you just quickly tell me whether it is convergent or divergent. ये देखना है बस. पावर strictly greater than 1 दिख गया तो immediately write convergent, otherwise divergent. Yeah, so simply write by p series test, this is the series is convergent because p is equal to 4, which is strictly greater than 1. So that's how easy this test is. You see आपको infinitely many series के आंसर पता चल गए हैं इस तरह की सीरीज, इस टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी से. So let me ask you 1 by n raised to power 1.1. 1.1, what is this series? Convergent again because बस power देखनी है, power is strictly greater than 1. So again convergent by, I told you make it a habit of writing
the reasons convergent because of this test, convergent because of this test. So this is also convergent by p series test. So there is a I hope you can answer now every question. Say okay, let's do the third example. 1 by n raised to power zero point 0.5, or even it can be written in fraction, but the answer is going to be divergent because power is less than 1. Equals to 1 के लिए भी we know it is divergent by p series test. सो वी नो ऑल द, अब हम क्लियरली बता सकते हैं और ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, इतने ही ये क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत बार ही आती है इस तरह की सीरीज. सो यू शुड जस्ट नो strictly greater than one convergent, otherwise always divergent. So now there is a fine boundary. You see there is a very good remarkable behavior which this type of series show. जब n की पावर exactly 1 है, exactly 1 I am talking about, means p is equal to 1, this is divergent, right? मीन्स जो सम है डिफाइंड नहीं है सीरीज का, वो बहुत बड़ा है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. बट इस वन में मैंने थोड़ा सा भी ऐड किया, राइट? पावर में मैंने इसको 1.001 भी लिख दिया. इफ दिस इज द केस, ये सीरीज क्या बन जाएगी? कन्वर्जेंट. बिकॉज माई रिजल्ट सेज कि p ग्रेटर देन 1 होते ही, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होते ही आपकी सीरीज कन्वर्जेंट. सो यू नो 1 इज द बाउंड्री. एग्जैक्टली 1 तक डाइवर्जेंट है, बट 1 से आप थोड़ा सा भी प्लस गए, 1 पॉइंट, इट्स अ वेरी माइन्यूट फ्रैक्शन भी आप 1 में ऐड कर दोगे, वो सीरीज कन्वर्जेंट बन जाएगी. सो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ this type of series behavior. You can search and explore this more. This concept has been very beautifully explained. I'll share the links with you for extra understanding. You can look at those videos, but otherwise to apply it in the question, this is how you just have to apply the p series test, right? So let's do a few more examples. p series test तो हो गया, p series की तो इतने examples are sufficient. So let me just give you another question. You have to test whether this series is convergent or divergent. So yeah, 3 by square root n. You have to tell whether this series is convergent or divergent. तो you know आपकी p series है 1 by n raised to power p. अब ये 3 is just a scalar. 3 is not a function of n. So that can be taken out of the sign of summation. So essentially this is this. So this one I know is divergent. Divergent by p series test. So अब हम रिजल्ट करेंगे. कुछ रिजल्ट्स हैं जो ये आपको रिजल्ट बताएंगे कि scalar multiple of divergent series is divergent and all these. We will do those results tomorrow, but for today we can apply that कि if a series is divergent तो उसको किसी भी scalar से आप multiply करो, non zero scalar से, so उसका वही behavior रहता है. Means convergent remains convergent, divergent remains divergent. If you multiply with any scalar, जैसे 3 is really not going to affect anything. So overall I would say this series is divergent because I know this is divergent by p series test. P is equal to 1 by 2. Right? This is one example. Another example, let's take 2 to infinity root n by log n. Right? So here, see, you have to now develop the thinking. GP नहीं है, टेलीस्कोपिंग नहीं है, so let's first try with, ये p series नहीं है, right? सीधा आपको दिख रहा है कि p series तो नहीं है, तो let's first try nth term test. So you need to tell me the value of this limit. This one, if you are giving me the answer divergent for this question, I don't know whether you are giving the answer for the previous question. Previous question was definitely divergent by p series, but ये p series नहीं है. इसमें log n का factor additionally आ रहा है, right? Log n is not a number. उसको 3 जैसा मत treat करो कि उसको अलग निकाल लेंगे. It's not a p series. इसके ऊपर हम p series test नहीं लगा रहे हैं. This is like a general question. तो आपने अभी तक जितने टेस्ट किए हैं उनमें से कोई भी applicable होगा and you should be able to get the answer. So I'm giving you the hint.
we'll try with the nth term test because that's what we have to do. जब भी हमें एक random question मिलता है, so first thing we should try is the nth term test. So you need to tell me the value of this limit, root n by log n. So if I evaluate, so I know ये infinity by infinity form बन रहा है direct substitution से. So this is indeterminate. So I'll be using a L'Hopital rule. So differentiating above and differentiating below, I'll get this, and then this is root n by 2, clearly infinity. So nth term is going to infinity, which is something non-zero. Therefore, your conclusion is this is divergent by nth term टेस्ट, राइट. तो यू सी इसके ऊपर कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मीन्स कोई मीन्स जस्ट एनथ टर्म टेस्ट से ही वी गॉट द आंसर. सो दैट्स हाउ. अदरवाइज एनथ टर्म टेस्ट अगर आप नहीं लगाओगे, यूल कीप ऑन थिंकिंग अच्छा ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज तो नहीं बन रही है, कौन सा टेस्ट लगेगा. मे बी आप इंटीग्रल लगाओ, बट इंटीग्रल के लिए डिक्रीजिंग होना जरूरी है. तो हो सकता है ये डिक्रीजिंग ना हो, तो आप बट टाइम वेस्ट कर दो उसको टेस्ट करने में. तो कई बार आपको आंसर्स मिल जाते हैं nth टर्म टेस्ट से ही. सो keep that in mind always, that if your series is not one of the standard series, so always you can go with the nth term test. No, you cannot use L'Hopital again, Rudransh, because ये indeterminate form तो जब बनता है तभी L'Hopital यूज करोगे ना. अभी तो ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है infinity. It is not infinity by infinity, so there is no point in applying L'Hopital again. जो L'Hopital सिर्फ infinity by infinity या 0 by 0 फॉर्म हो तभी आप लगा सकते हो, अदरवाइज you will not do that. Right, so this was root n by log n. So when we just do the this will be this. You can verify the calculations. Right. So what I'll do, I'll stop here. And one thing I want to ask all of you, for different groups, you have your groups, right? ENC 1, 2, 3 up to 8. You please, all of you leave your contact numbers in the chat box. GRs, if you have already decided your GRs. For individual groups, ENC1, ENC2, ENC3, I need contact information of all of the GRs of that group. So please leave your contact numbers in the chat box. I'll take that from there and mention your names and group number. Meanwhile, I'll be taking the doubts. Yes. Yes, Nandish, you are asking if fx first increases, then decreases. Then after some value increases, no, then Cauchy integral test is not applicable. I told you test is going to be applicable only either completely decreasing और थोड़ा सा पहले राइज किया फिर डिक्रीजिंग. बट ऐसा नहीं है, ऐसे बिहेवियर होगा तो इस कंडीशन के ऊपर इंटीग्रल टेस्ट नहीं लगेगा. उसमें है कि डिक्रीजिंग होना चाहिए फॉर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज. तो स्टार्टिंग से नहीं तो ठीक है, कुछ टर्म्स के बाद डिक्रीजिंग, बट एक बार वो डिक्रीजिंग है उसके बाद इट कैन नॉट चेंज इट्स बिहेवियर, तो तब नहीं होगा. Right. For p equals to 0, I used nth term test. Yeah, for p is equal to 0 आप nth term test से imply करना चाहते हो कर लो, otherwise we know ये constant series है, हम discuss कर चुके हैं, ये divergent series के category में आता है. आप nth term लगाओगे, इस series का nth term is 1, आप nth term से करना चाहते हो, so nth term is 1 which is non-zero, so वहां से भी divergent आ रहा है. So howsoever you want to see that. Right, and yeah, if you want to see the calculation of the last question, so this is what I have done here. Sorry, where it's gone. Yeah, here it is. Yeah, is there any thing wrong? ये 1 by n है, so obviously this will be n by 2 root n, so it's square root n by 2. राइट. देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आया है तो L'Hopital लगाया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे. रूट एन का डेरिवेटिव, रूट एन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by 2 स्क्वायर रूट एन. लॉग एन का डेरिवेटिव इज 1 by n. सो आई जस्ट took this n to the numerator, so this is n by 2 square root n, so it will cancel square root n by 2, and that is infinity. Right, so tomorrow we'll do some more tests and some other important results also. Yeah, so I'll take the rest of the doubts tomorrow. I can take quickly one more doubt if anybody has.
Yeah, I hope everybody has written the contact numbers. Please do mention your group, which group you belong to. Otherwise, I will not be able to keep track of that. Right? So this was integral test. Yes, Uday. यस मैम। मैम आपने ये बताया था ना पीसीईस के स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिक और टेलीस्कोपिक के साथ, मैम वो एक बार रिपीट कर दोगे? कहाँ पे? मैम वो पी सीरीज की स्टार्टिंग में राइट साइड आपने ग्रीन कलर से लिखा था कुछ। Okay, this one I just told you कि सम ऑफ द सीरीज के बारे में, कि जो ज्योमेट्रिक और टेलीस्कोपिंग सीरीज है उनके जो रिजल्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, दोज रिजल्ट्स आर केपेबल टू गिव द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द सीरीज। कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस का रिजल्ट भी पता है और अगर हमें एडिशनल भी पता है कि सम क्या होगा अगर कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली टेलीस्कोपिंग में भी हमें सीक्वेंस की जो लिमिट आती है अगर वो फाइनाइट आती है तो हमें पता है कन्वर्जेंट है, और वही लिमिट सम ऑफ द सीरीज भी होती है। तो ये उन दोनों टाइप ऑफ सीरीज के लिए है। इसके अलावा हम जितने भी टेस्ट करेंगे, इंटीग्रल, ये पी सीरीज, यू सी ये पी सीरीज भी सिर्फ ये बता रहा है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, बट इट्स नो वेयर टेलिंग यू कि सम क्या होगा। इफ इट इज कन्वर्जेंट देन व्हाट इज द सम। ये कोई भी टेस्ट आपको ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे। ये मैं कॉशीज वाला भी है ना? कोई भी टेस्ट अदर देन ज्योमेट्रिक एंड टेलीस्कोपिंग, नो अदर टेस्ट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द सीरीज। तो ऐसा नहीं है कि उन सीरीज के सम एग्जिस्ट नहीं करते, उनके एग्जिस्ट करते हैं सम, बट वी रियली कैन नॉट, यू नो, देर इज नो वे, ये टेस्ट में कैपेबिलिटी नहीं है वो इंफॉर्मेशन देने का। आई होप दैट ओके इज क्लियर। यस मैम, थैंक यू। Yeah, so I'm just leaving. Yeah, I'll see you all tomorrow.